देवियों और सजनों, भाइयों और उनकी बहनों, आज हम आए हैं ब्लॉग में। मैं ऐसा कुछ दिखाने वाला हूँ ना, कुछ स्पेशल फील कराऊंगा। जितने बड़े हैं ना उतने ज़्यादा कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं। अपना पीयूष यार कहीं खो गया है। हम जा रहे हैं भाई बैटरसी एवोल्यूशन पार्क, ऐसे ही नाम है ना उसका पार्क। और वहाँ पे हम देखेंगे, क्या देखेंगे, बहुत सारे कैमरास, फिल्मिक कैमरास, एंड इट्स गोना बी अमेजिंग। सो अभी ये ट्रेन का सफर शुरू हो चुका है एंड इट विल टेक अनदर 1 hour एंड विल रीच देयर ऑन टाइम। आई थिंक फकिंग लेट मैन, बट इट्स फाइन। वैलेंटाइंस पे लोग क्या करते हैं, हम मचाने जा रहे हैं कैमरों के साथ। ठीक है, चलो जी, मिलते हैं वहाँ पे। हेलो माय फ्रेंड्स, कैमरा के चाहने वालों, आपके लिए आज NRI पुलकित एक सेक्सी सा ब्लॉग लेकर आया लंदन के अंदर, जहां पर ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपो होता है, जहां यू कैन सी really big cameras, really big camera rigs and lot of other stuff like crane, steadicam, tripods, cinema lenses, cinematographers की दुनिया का ये बादशाह है इवेंट। और इस इवेंट में अगर आप नहीं आते हैं तो आप दुनिया में क्या कर रहे हैं बताइए मुझे। सो बेसिकली कैमरा के चाहने वाले, फिल्म मेकर्स, सिनेमाटोग्राफर्स, ऐसे इवेंट्स इनके लिए बहुत गांड फाड़ और सेक्सी होते हैं। और जैसे कि मैं ये देख पा रहा हूँ, हिताची का सेक्सी कैमरा है भाई, और ये थैला भी मार लिया है भाई ने, तो क्या नाचो एज यूजुअल। और पीयूष हमारा आज बिजी है, वाइड एंगल कैमरा लेंस लाया नहीं है, तो मुझे सारा ये आईफोन पे ही शूट करना पड़ रहा है। कोई नहीं, फिल्म मेकर की कलाकार होना चाहिए भाई, कैसे भी शूट कर लेते हैं, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, बस अपने पास ये रोड का माइक है और जिंदगी चलनी शुरू। और ये हम अंदर पहुंच गए हैं कैमरों की दुनिया के अंदर, और ये रोबोटिक कैमरा, ओ माय गॉड, ये क्या चल रहा है भाई। अपना पीयूष यार कहीं खो गया है इस भीड़ में। अरे मिल गया पीयूष, कैसा पीयूष भाई? जैसे कि आप देख रहे हो, हम ये रोबोटिक आर्म्स वाले कैमरे के पास पहुंच गए हैं, और आई थिंक ये बहुत ही सेक्सी कैमरा लगा हुआ है उसके ऊपर, बड़ा वाला, जो कि मैं नाम पढ़ नहीं पा रहा हूँ। कौन सा वाला नाम? रेड होगा शायद, ये रेड नहीं है, ये एरी है शायद। हाँ, पर लौंडा बहुत समझदार लग रहा है कैमरा मुझे। चले भाई, कैमरे की कलाकारी हो तो ऐसी हो, वरना ना हो। लव दिस कैमरा मैन एंड लव द एस्टन मार्टिन। तो गाइस, आपने ये कैमरा देखा होगा, कहाँ देखा होगा? अबे कहीं नहीं देखा होगा, तुम लोगों ने सिर्फ शूट होते हुए देखा। तो बेसिकली दीज कैमरास आर यूज्ड टू शूट फुटबॉल मैचेस, क्रिकेट मैचेस। भाई इनका जूम लेंस इतना किक एज होता है ना, कि जो कुड़िया जो क्राउड में होती है ना, या जो हस्बैंड क्राउड में होते हैं, सारा कैप्चर करता है भाई। ये काम करता है इसका फोकस का, वहाँ काम करता है जूम का। आँख लगाओ और भाई तड़ातड़ लड़कियाँ ताड़ो जूम करके, ठीक है? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? आई विश मैं फुटबॉल सिनेमाटोग्राफी करता होता और ये कैमरा यूज़ करता। ऑब्वियसली मैं इस कैमरे को लेके भाग नहीं सकता हूँ, बट दीज कैमराज लाइक, इनमें इतने ज़्यादा डिटेल्ड फीचर होते हैं भाई। ऑडियो से लेके हर तरीके की अलग अलग केबल्स होती हैं। और यार ये कैमरास जितने बड़े हैं ना, उतने ज़्यादा कभी कभी कॉम्प्लेक्स भी हो जाती हैं इनकी सेटिंग्स, क्योंकि हम जो हैं, वी आर लाइक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, वी डोंट like to have like a team of people, but these kind of cameras are little complicated. But on the other hand, obviously if you want to shoot football or cricket or any other sport like rugby or something like that, these cameras are kick-ass. use करना है करो, नहीं तो मैच उठाओ, ठीक है? जिनकी गांड में कैमरों के कीड़े हैं, जिनकी गांड में फिल्म मेकर बनने का भी कीड़ा है, वो यहाँ पर आए और एक्सपेरिमेंट करें। जिप क्रेन्स हैं भाई, ऐसे ऐसे किक एज कैमरा हैं, गांड फट जाएगी तुम लोगों की भाई। मतलब भाई एरी लो, ब्लैक मैजिक लो और रेड कैम लो भाई, तुम बड़े ब्रांड का नाम लो, सोनी लो, कैनन लो, यहाँ पे सब आते हैं बड़े बड़े कैमरा। स्पेशली ऐसे कंपनीज आती हैं जो ऐसे ऐसे कैमरा से शूट करती हैं, जो कि हम बड़ी बड़ी फिल्म्स देखते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि उनके पीछे की मेहनत कैसे होती। तो यहाँ पर आपको कैमरा क्रू के लोग मिलेंगे, और ये इवेंट होता है लंदन में, ठीक है? याद रखना,
और ये वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट है इन यूरोप। और यहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा क्रेजी चीज़ें देखने को मिलेंगी और कुड़ियाँ तो देखने को ही मिलेंगी। मुझे लगा था साला लंदन में ना बहुत बेरोजगार लोग हैं, पर यहाँ पर लोग आते हैं और अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आओ मैं आपको दिखाता हूँ अपने नज़रिए से, अपनी नॉलेज से कि यहाँ पर क्या है आगे देखने को, क्या क्या आप सीख सकते हो। और बेंचो कमेंट करके बताओ तुम्हारा कौन सा कैमरा है फेवरेट ना, ब्रांड मॉडल जो बताना है बताओ, नहीं बताना है तो भी बता दो ना, भाई के लिए इतना नहीं कर सकते। चल भाई पीयूष आजा, थोड़ा सा ना दिखाते हैं लोगों को यहाँ पे BSC एक्सपो बेंचो। चल भाई चलो, फ्री की चॉकलेट भी है यहाँ पे, खानी है तो खा लो, नहीं खानी तो मत खाओ। यहाँ पे फ्री का पानी नहीं है पर, ठीक है ना भाई। देखो ये है दुनिया कैमरों की, बड़ी बड़ी जिप क्रेन्स हैं यहाँ पर आपको, मतलब स्टडी कैम देखने को मिलेंगे, आपको रोनिन्स देखने को मिलेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ है यहाँ पे भाई। कैमरों का मेला देखना है, पैंचो यहीं पे ही है, ठीक है ना, बकेती नहीं साथ। सलमान खान स्टाइल कुछ अच्छा काम करता है भाई वैसे तो। चलो चलो चलो, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। जिप क्रेन है भाई। फॉर योर कंफर्मेशन, शादरा में एक ब्रांड है जिसका नाम है कांता जिप क्रेन, जो कि बड़ा फेमस है, तो मैं बता दूं रेफरेंस। अरे भाई देखो भाई देखो भाई, भाई रोड क्रॉस कर रहा है स्टडी कैम वाला भाई। क्या फिल्म मेकर पैसा कमा पा रहे हैं? रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? बी ऑनेस्ट विद मी। नहीं, मजाक करता हूँ, कमा पा रहे हैं। देख रहे हो ना मैं इतने एक्सपेंसिव इक्विपमेंट कैसे ले लेते हैं, ऐसे ही तो पैसा आता है। चल भाई आजा भाई, क्या लाइट है, इतनी बड़ी लाइट, बेंच शो यार, क्या बोलूँ इस लाइट को देख के ब्रो, अमेजिंग। एक और स्टडी कैम ऑपरेटर, अच्छा ये तो वी वाला है ना अभी। अरे एक और स्टडी कैम ऑपरेटर आ रहा है भाई, मैं पूछ के देखता हूँ, क्या पता मुझे भी ऑपरेट कराने दे। Can I put it here? If it can, yeah, it's fine. But I am going to do some adjustments first. Okay. If he tells me to take it off, then we'll take it off. But Sure, sure. so I think it will be robotic in future. this one, hold it like that there, and you want to try and slide it in the hole there. So I'll hold wait. There we go. So Is just it one working, moment. the camera? Hold on. That's fine. I can hold it if you want. You can bring the battery. I can hold it like this. तो भाई ये भारी बहुत लग रहा है पीयूष भाई, भारी बहुत लग रहा है, बट मज़ा बहुत आ रहा है। I think I'm operating steady cam after a few years. I've done this in University of Hertfordshire, a proper training. I think my lecturer name was Mike only, so he helped me to do the training. Hi, I am with Omar today, and I think we are here at like Tiffin, right? Yes, right, Tiffin. yes. And this is really amazing experience. I just tried the study cam, and Omar literally helped me a lot, telling about the advanced technology in study cam, and I think he will tell you like more about this advanced motor and the advanced version of the study cam. So thank you so much, Omar, for giving your time. And can you just tell something about the latest study cam and the evolving technology? Sure. Yes. So right here is what we call the Steadicam Access, Okay. and it's basic. And what's with this one? This one, the one that you've tried as well, is meant for the lighter loads as Okay. well. So with you, what you have is the Aero 30 arm, so it's meant to take payload of like 30 pounds, but with the sled, without the sled included. So with the sled, you're looking around 20 pounds. If I 20 pounds. That's Okay. correct, yes. And you were telling me And- about the new motors, like the version I used before, that doesn't have the motors here. Yes. But can you just tell me about the motors? Yes, absolutely. So this is what you see here, what you were operating on the Steadicam Access was what we call the Steadicam Volt, Okay. and what it's meant. And so with this one that you used, Yeah. it's there to help reduce the pendulum effect, and also it's meant to help also give you to add to this. So I'm lost for words a little bit to assist with your stabilizing. Okay. So what we have here is the roll Okay. and the tilt. It makes a basically more smoother move. Yes, it's Yeah. meant to help to give it slightly more stabilization. Just Okay. to see on that. Yeah. So, like I described to you earlier on, Yeah. you have
a lot of shots that will have a slightly flow effect on the horizon. And what Okay. this does is to really help lock it out and reduce that effect. So you get a really straight, Okay. steady shot as well. I can see that. I was really happy to use this one and the latest one. I think you told me there's another one at the back, which is I think meant to be have for the higher payload, if I'm not wrong. That's correct. Yes, Yeah. you're absolutely right. Yeah. It's meant for the high payload. The arm is bigger. I could quickly show you. Yeah, sure. Over here. Okay. So compared to your arm, your one is the Aero 30. This one is the G70. And X2. how much payload it can take? So based on the number, it's 70 pounds on this one. That's nice. That's amazing. That's interesting. So these ones are, you're really meant to use it for the bigger rigs as Big well. rigs, So I'm just yeah. going to put this back because this Sure, is a bit sure. heavy. I can I understand. mean, you can feel it. So yeah, I'll just. yeah. So if you just have a hold on it, It's heavy, man. It's really, really heavy. yeah. But yeah, we are making films, so yeah. When you make films, you don't have to worry about the weights. You have to No. worry about the results, how it comes. So Absolutely. yeah. So let me just put this back. Yeah, sure. Why not? So another one with the Steadicam axis as well, and I think Yeah. with the Volt, there's a new version of the Volt. I'll come to that in a bit as well, but this one introduced it. So remember I said this is meant for the roll and the tilt. Yeah. The tilt. There's an additional motor now, so it's 3 motors Three actually. motor axis, So there is an additional motor for the pan. Exactly. So So I can pan more smooth, like as compared to the old time. you can still pan smoothly, but Yeah. the additional motor is to give some resistance on the Okay. panning. So Okay. on the original, like maybe on your Steadicams that you did a Before. while ago, there was Yeah. no motors. So Exactly. when you would pan, it would just like it was quite free. Quite like you have to control with your hands. Exactly. Yeah. Yes. So with the additional motor, there's some resistance. So Okay. it helps you have like more grip with your panning. You have more Yeah, assistance. If you can want to and do some slow resistance. pan or like fast pan, you can Yes. just adjust with the settings and you can do it. Yes. Regarding with the settings as well, Yeah. I mean, over here, all your settings are here. So so we Oh, had them that's quite strong amazing. for you, Yeah. and so they'll quite turn up. So you can dial each one. So basically, I can customize the like flow of the. Yeah, you can turn it all the way down Okay. to keep it, pretty free, no resistance at all. Exactly. Or you can turn it in the middle, however you want as well, depending true. on your shot, depending Yeah. on the whatever kind of aesthetic that you're after. That's cool. Thank you so much, Omar, for your Not a time. problem. You No like gave a really a refreshing knowledge after a long time. Oh. I think I'll be happy to use Steadicam again because I think from last couple of years I was focusing more into the Ronins and all, but I miss Steadicam. So Yeah. if I'm shooting a music video or commercial advertisement, I'm gonna try Steadicam, the new technology again. And thank you so much for your time again. Oh, it's Have not a a lovely problem day, at all. and you guys are working really hard. Oh, thank you so much. Yeah, I And, can see I'm that, glad- yeah. और ये कैमरे का माँ का भोसड़ा हो गया. Hi, Mark. How are you? Very well, thank you very So much. today I am at this event and I met Mark. He's one of a gem of a person because he knows a detailed knowledge about this product. And I think Mark will tell us in really depth about this product, how it works and how it's gonna change the industry, the cinema industry and the filmmaking industry. So Sure. hi Mark, tell me about Sure, the product. absolutely. So this is the Agito. I'm from a company called Motion Impossible, and we manufacture this beautiful machine. And we like to say it's like a Swiss Army knife of filmmaking. Oh, Okay, so it's a completely modular system. So Yeah. you can, for example, you take some bolts out of the side, Yeah. and this whole drive end pulls out, and you Ooh. can put track drive ends on it, Yeah. and it can go on a track. You can also put that same track dolly on the ceiling, on a truss. Truss. So whether you're looking to go off-road, whether Yeah. you're looking to do live events, whether you're looking to do cinema productions, Even, I think, commercials, automotive. You can shoot. automotive, exactly. Agito is already doing all of these things. And like, what about the distance it can cover? Like maximum distance it can cover and the speed. If you tell me about that. Sure. So we have radio modules. Okay. So it is
This one's on 2.4 gigahertz. However, you can quite easily swap out this module for different modules. So if ever you're in a certain area and you have to use a certain frequency, Okay. you just swap over the module. There's no change in any settings. Swap it over, works straight away. Okay. It works on a frequency hopping radio system, Okay. which means it doesn't get in the way of anything else, and other things don't get in the way of it. So we have a really robust connection. Distance can vary, but usually you're going to want line of sight when you're operating with a controller anyway. So you're never going to run out of distance. However, you can now control this in a number of ways, so you don't have to use the controller. Yeah. This is the new Gen 2, which has a lot of new features, one of which is Ethernet. So with Ethernet, you can now use wired or wireless Ethernet Yeah. to control the system. And you don't have to Have that always use this. nearby, like you can go anywhere. Of course, so whether it be used on filmmaking, TV stations, there's lots of different ways to use this equipment. And we're just trying to make it as flexible and versatile as possible. So no matter how you're trying to move a camera Yeah. and what the situation is, this can do it. And what's the maximum payload it can take, the cameras like? Sure, so that's going to vary based on your setup. Yeah. So for example, here we've got our lightweight carbon fiber tower. Okay. This tower up to here can take 22 kilograms. That's nice. 22 kilograms. So that's gonna give you enough of a payload for a really high-end Cameras. camera, stabilized head, as well as Yeah, even let's if say I'm something like shooting this a with an football NRI. match and I have a heavier lens, then I think it can take it. But we have to change this one. Like I think Absolutely. depends, So yeah. we have different columns. So this is called the tower, and we Tower. also have a column which can take 45 kilograms. Oh, that's nice. So if you're looking to do stuff like put a Libra head on it, something really big heavy, a big heavy payload, Yeah. we can just swap out the tower and we can still absolutely do it. So But it's like totally like customizable. Like you can change the stuff and you can. absolutely. So And I was asking, like, what's the maximum distance of this wire we can have? Like 10 meters, as 1 much kilometer? as you want. One of our customers did a concert in Munich with Adele, Okay. and I think they did about 200 to 300 meters Oh my god. of magnetic track. Oh my god. Imagine shipping and Yeah. setting up Oh. 200 to You 300 need a big meters team for of that. real track, Exactly. real aluminium track. Yeah. So when you're on the magnetic It's crazy. mag tracks, what we call it mag tracks, with these magnetic sensors here, the magnetic strip can also go underneath the carpet. So over here we've got it underneath the carpet, so it just disappears. Once you drive over the magnetic strip, you flick a switch and you're locked on. And now you've only got control over forward and backwards, but the steering is completely done by the system, following the magnetic tape. Okay. So if you were looking to go on a set path, whether it be for safety, whether it be for just ease of setup or repeatability, this just gives you so much versatility. Because imagine trying to get like a specific curve Yeah. with track. It's really difficult. And You it's need not, custom that track. big track. It's like literally small, and you can tiny literally little strap hide tape. inside the car. Exactly. And when you're done, Yeah. you pull it up, you Nice. roll it up, you can Yeah. use it again. Easy peasy. Easy peasy. Ah, Easy peasy. That's nice. Thank you so much, You're Mark, so for welcome. telling me about this product. I think it's the game changer, the future of filmmaking. Guys, I hope आपको ये पार्ट पसंद आया होगा. हमने बहुत कैमरास का ज्ञान शेयर किया है इस माध्यम के थ्रू और बताया NRI पुलकित ने कि इस इवेंट में आप कितना कुछ सीखने को मिल सकता है. आप कितने बड़े बड़े ब्रांड से मिल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट्स बना सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं और कॉन्टैक्ट मार्केटिंग, आप अपना धंधा शुरू कर रहे हैं तो कितना कुछ कर सकते हैं इस इवेंट. तो बाकी की इन्फॉर्मेशन के लिए, बाकी के NRI पुलकित के एक्सपीरियंस के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखना. उसकी एंडिंग और बढ़िया है और उसमें एक बहुत स्पेशल चीज़ है. मैं आपको सच बता रहा हूँ, देख के मज़ा आ जाएगा. चलो थोड़ा सा सस्पेंस खोल देता हूँ. जब आप वो वीडियो देखोगे ना, उसके अंदर एक सेगमेंट ऐसा होगा जहाँ हमने फास्ट एंड फ्यूरियस के जो एक्शन कोऑर्डिनेटर हैं उनसे बात करी है. मिस मत करना वो कंटेंट. पार्ट 2 ज़रूर देखना. और ऐसे ही ज्ञान के लिए कैमरास, कार, ट्रैवल, NRI पुलकित को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, वीडियो शेयर करें और जो आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट लगा हो ना,
कमेंट करके मुझे नीचे बताएं, ठीक है, और मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता, अस्सलाम वालेकुम एंड बाय बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल।